हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग्स। जो आज का एक टॉपिक्स है फ्रेंड्स, स्टैटिक्स का टॉपिक्स है। ये बेसिकली मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच के हो, सिविल हो, ईएनटीसी, कंप्यूटर, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज स्टैटिक्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे हियर, दैट इज मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, हाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस एंड समथिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर दैट पर्पज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लेवल से इस पे 100% प्रॉब्लम्स आते हैं। सो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स टेक केयर। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस हियर द फर्स्ट डेफिनेशंस, आफ्टर देन how to find the value and what is the relations one variable to another variables and so on. So तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स हियर, मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के लेक्चर्स में आपका वेलकम है। फर्स्ट हम बात करेंगे हियर दिस अबाउट मोमेंट। तो मोमेंट टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट मोमेंट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप्स है आपके, दैट इज अ मोमेंट इज टू टाइप्स। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, मोमेंट अबाउट मीन विच इज आल्सो नोन एज सेंट्रल मोमेंट, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज सेंट्रल मोमेंट। एंड मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू ऑफ ए, दिस इज रिप्रेजेंटेड म्यू आर एंड विच इज द म्यू आर डैश। नेक्स्ट कम टू दिस, व्हाट इज द मोमेंट अबाउट मीन फॉर डेफिनेशन। सपोज आर्क मोमेंट ऑफ द वेरिएबल्स एक्स, आर्क टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर्क मोमेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स अबाउट द मीन of a about mean means x bar here of a distribution is denoted by mu r, that is symbol of representation of mu r, and defined as this is mu r equal to 1 by n xi minus x bar, that is the mean raised power r. It is simple data, means सिर्फ only data given or do not be given the frequency and something, that case use of this formula and evaluate where n is क्या, number of observations, n is equal to number of observation, कितने नंबर्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। एंड समेशन ऑफ f, दैट इज अ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हियर द व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन f of xi x bar raised power r, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन मींस ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप। म्यू आर क्या हो जाएगा आपका, 1 पुट अप करके म्यू 1 और म्यू 2 समथिंग, तो हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सपोज मान लीजिए आपको म्यू 0 फाइंड करना है, पुट r इक्वल टू 0, तो हाउ मच वी गेट्स हियर, व्हाट इज द गिवन। सपोज दैट केस हम वर्क कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज देखते हैं 1 अपॉन समेशन ऑफ f, हियर समेशन ऑफ f ऑफ रेस पावर 0 मींस दिस इज xi माइनस x बार रेस पावर 0, so that is 1 means this is 1. So mu 0, mu naught equal to 1, which is fixed. Mu naught is 1. Next mu 2, एक वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज अबाउट दिस। सो नेक्स्ट इज द mu 1, पुट दिस हियर, समेशन ऑफ 1 अपॉन समेशन ऑफ f, हियर दिस इज f of xi minus x bar, दिस इज सिंप्लीफाई करके देखिए f of f and here summation of fi xi minus this is here x bar is a constant, so क्या मिलेगा आपको, सिर्फ summation of f means x bar here summation of fi upon summation of f, so that is which is the x bar, means x bar minus x bar, that is 0, means value of mu 1 equal to 0, this is fixed. It means first central moment या first central moment about the mean, ऐसा mean is mu 1 is 0. Next go to the form mu 2, देखते हैं what we get mu 2. तो mu 2 is equal to this is here summation of f, here summation of f x I minus x bar whole square. Then evaluate. So what is the evaluation of this? अब देखिए
ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स आई एक्स बार म्यू टू. सो म्यू टू इज इक्वल टू, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशंस, what is the, this is the sigma square, this is standard deviation, sigma square, that is your standard deviation, that is a whole square. It means this is sigma square here. So mu 2 is equal to sigma square, that is a find out. Standard deviation, square of this is represented with a standard deviation, that is a sigma square, and variance under root sigma. Variance is equal to, standard deviation. So this is a standard deviation. Standard deviation is equal to sigma. So standard deviation is sigma equal, what we get, so now friend, this is a, which is a sigma square, it means standard deviation. This is here, what is the represented by here, variance. And okay, which is the represented by variance. And standard deviation, what is the sigma? So sigma कैसे find out करेंगे, root 2, that is the standard deviation. So standard deviation is equal to mu 2, means standard deviation, this is a mu 2. Means central moment, square root of central moment mu 2, then we can find out the standard deviation, which is represented by variance sigma square and so on. तो एक जनरल हम mu1 mu2, बाकी के जो टर्म्स है वो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, बट हियर दिस इज क्लियर. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम चेक करेंगे, राइट आउट करेंगे मोमेंट अबाउट मीन, हो गया. नेक्स्ट मोमेंट अबाउट any value, moment about any value a, ठीक है, that is any value a. So same work, so first we will write down the definitions and then calculations. So first, the moment about any value a. So now friends, next is the moment about the mean value of a. कोई भी एक वैल्यू होगा, कोई पॉइंट्स होगा जो a को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट इज द a, तो उससे अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने हैं. तो दैट इज द अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन अबाउट एनी पॉइंट a, दैट इज अबाउट एनी पॉइंट a इज इंपॉर्टेंट हियर. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय दिस mu r dash. So mu r dash is defined as this, mu r dash is equal to 1 by n x minus x bar raised power. This is a एक सिंपल डाटा होगा. It means simple data, that is only, it means do not given the frequencies. If frequency are given, then use this. Frequency are given. This is your frequency are given. So when frequency are given, then use of this fi, this is x minus d. Suppose x minus a is equal to d consider कर लिया आपने, so d raised power r. And another suppose that is a grouped data. ये grouped data के लिए है, that is here also grouped data. Here is also ग्रुपेड डाटा मीन्स क्या है कि दैट इज द इंटरवल के फॉर्म में डाटा गिवन हो, सो दैट क्लास इंटरवल के फॉर्म में, तो यूज कर सकते हैं आप एनी वन, इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, दैट इज ग्रुपेड डाटा. तो अब हम देखते हैं कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करके, देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है अबाउट द रिलेशंस. व्हाट वी फाइंड आउट दिस mu1 mu2 mu1 एंड सो ऑन. तो पहला वर्क है फाइंड आउट द, जैसे mu r गिवन है हमारे पास, फर्स्ट mu r dash is equal to 1 upon n summation of f x minus a, ठीक है, that is x minus a raised power r.
So this is given. So it means mu 0 dash. So 1 by n summation of f, and which is, this is rest for 0 is 1 means 1. So mu 0 dash equal to 1. ठीक है, क्योंकि summation of f equal to n. So this is mu 0 dash is equal to 1. It is always fixed. Next mu 2 dash, mu 1 dash is equal to this 1 upon n summation of f x minus a. अब देखिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप, x माइनस ए गिवन है, सो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड्स, दिस इज x माइनस ए. तो अब x माइनस ए को आपको डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज सपोज व्हाट इज दिस 1 अपॉन एन समीशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो दिस इज समीशन ऑफ f of x माइनस a कांस्टेंट है, तो समीशन ऑफ f अपॉन n. सो दिस इज व्हाट इज दिस mu 1 dash, this is mu 1 dash is equal to, this is mean f of x, it means this is represented by x bar minus a which is 1, that is 1. So a means x bar is equal to mu 1 dash plus a. X bar, this is mean is equal to mu 1 dash plus a is a find out the relations. अब नेक्स्ट वर्क है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक्स है वो यूज करेंगे, बट ये जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन हियर. सो नाउ फ्रेंड्स, जो टॉपिक्स हियर है कि रिलेशन बिटवीन द मोमेंट अबाउट द मीन म्यू आर and in term of moment about mu r dash, that is the relations आपको find out करने हैं. तो एग्जाम में तो आपको फाइंड आउट नहीं करने पड़ते, बट मैं यार एक डिस्क्राइब कर रहा हूँ फर्स्ट. सो एवरीवन देन वी नो दैट दिस म्यू आर डैश, म्यू आर इक्वल टू 1 by n f of I x I minus x bar is for r, that is the value of mu r. But we know that di is equal to this, di is equal to xi equal to the xi equal to this. Put this xi place of this mu r 1 upon f I di plus a minus x bar. आपको क्या करना है, mu 1 dash मतलब mu r dash के फॉर्म में एक रिलेशंस क्रिएट करना है आपको हियर. दिस इज f I di x माइनस, और विच इज ऑलरेडी दिस इज प्रूफ, आपने प्रीवियसली प्रूफ किया है. सो mu r दिस हियर di और mu 1 dash. नेक्स्ट using the binomials, that is the binomial using x raised to n c0 x raised to n a0 and c1 x raised to suffix का difference n into a, फिर similar and so on. So use of this here f of I di rc0 di raised to something and rc1, क्योंकि माइनस है तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव राइट डाउन दिस. सो di raised power r minus 1. नेक्स्ट mu 1 dash rc2 d raised to r minus mu 1 dash whole square rc3 mu dash cube and last up to last term. Similarly you can write down this. So here where rc0 is 1, rc1 r, rc2 and so on, this is rc3 and so on. So now this put here and simplifications. So just here mu 1 dash whole square and next terms. So next term, how to find out what is the next term. तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम. नेक्स्ट टर्म फर्स्ट, व्हाट इज दिस म्यू आर डैश, वी नो दैट 1 upon n summation of f r di raised power r, that is a म्यू आर डैश की वैल्यू. तो उसमें हमको चेंज करना है, मींस हियर म्यू आर इज इक्वल टू दिस which is mu r dash minus r into, this is here mu r minus 1, mu r minus 1 dash. Next this is here mu 1 dash plus r into r minus 1 upon 2, and here this is mu r minus 2 dash. Clear? This is use of this, and mu 1 dash whole square, mu 1 dash whole square.
नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, r इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 इंटू म्यू आर माइनस टू, दिस इज म्यू आर माइनस 3, म्यू आर माइनस 3 डैश एंड म्यू वन डैश होल क्यूब अप टू समथिंग। ये टर्म्स आपको फाइंड आउट होंगे इस तरह से। तो अब देखते हैं, यू ऑलरेडी फाइंड आउट दिस, you are already fine. We know that here mu naught equal to 1 and mu 1 equal to 0 0. This is already find outs. आप here find out कर सकते, put r equal to 1 and simplify, then we get answer. So otherwise we can simplify and we find out this. तो simplify आप generally find out कर सकते हैं. This is next. Suppose what is r equal to 2? Put mu 2 is equal to this mu 2 dash minus this is 2 into mu 1 dash, here mu 1 dash into mu 1 dash plus 2 into 2 minus 1 upon 2 and here mu 0 and mu 0 mu 0 dash and here mu 1 dash whole square. So that is which is cancelled. Here 2 mu 1 dash whole square. So mu 2 dash minus mu 1 dash whole square, that is the value of mu 2. Here is find out. First relation is find out, this is mu 2 dash because mu naught dash is 1. So mu naught dash is 1. So use of this. So mu 2 is find out here. Similarly you can find out the mu 3, mu 4 and so on. Similarly you find out. Similarly mu 3 is equal to, this is write down mu 3 dash minus 3 mu 2 dash mu 1 dash plus 2 mu 1 dash whole cube, that is a mu 3, value of mu 3. Remember this, mu 3 is equal to mu 3 dash minus 3 mu 2 mu 1 dash plus 2 mu 1 dash whole cube, that is the value of mu 3. Next mu 4, what is the mu 4? आप here put करके आप simplify करिए, put n equal to 3 and simplify, then we get the answer. And mu 4, so mu 4 is equal to ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर लिया है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ राइट अप कर रहा हूँ, म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश होल स्क्वायर एंड माइनस 3 म्यू 1 डैश रेस पावर 4. तो अब ये वैल्यू सब पुटअप करके आप सिंप्लीफाई करना है आपको, तो आप ट्राई करिए, क्योंकि आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद करने हैं, आपको प्रूविंग नहीं करनी रहती. सो दैट इज द रिजल्ट हियर म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4. एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो अब इस पे नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है ये सिंपल रहा, मतलब रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल मोमेंट एंड अबाउट मी. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड आता है स्क्यूनेस कोर्टोसिस से रिलेटेड. तो फर्स्ट वी राइट डाउन एंड आई विल डिस्क्राइब अगेन हियर, देन नेक्स्ट वर्क. तो फ्रेंड्स यार स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, तो मैं इसके बेसिक डिफिनेशंस के बारे में नहीं जा रहा हूँ, नो गो, फिर सिर्फ फार्मूले और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मेरे उनके लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स और आते हैं, बेसिक डिफिनेशंस टू अनदर बट इज हियर. सो फर्स्ट व्हाट इज द स्क्यूनेस, इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दिस आपसे पूछा जाता है इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज द रिप्रेजेंटेड बाय द बीटा 1 और म्यू 3 होल स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब नियर, and the beta 1 equal to 0, the distribution is symmetrical. Next, kurtosis is here. Coefficient of kurtosis be represented by beta 2 and that value is a mu 4 upon mu 2 whole square.
Here three conditions are. If beta 2 less than 3, the distribution is called platykurtics. Beta 2 equal to 3 है, so mesokurtics, and greater than है तो leptokurtic, and more peak points something. So एक जनरल रिप्रेजेंटेशन रहा. स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस के डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं, बट इज हियर. तो अब इससे कुछ रिलेटेड हम एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा. तो फर्स्ट राइट डाउन प्रॉब्लम्स हियर एंड फिर हाउ टू द सॉल्व कैलकुलेशंस एंड इवैल्यूएशंस. सो प्लस लेट्स वाच फर्स्ट वी राइट डाउन दिस. मेरे प्यारे बच्चों, जो मोमेंट अबाउट मीन है, मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू समथिंग, उससे रिलेटेड जनरली टू टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं. एक सिंपल जैसे डाटा इज गिवन हो, एंड सेकेंड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ग्रुपेड डाटा मीन्स इंटरवल गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप सेंट्रल मोमेंट, एंड इंटरवल नॉट गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप सेंट्रल मोमेंट. तो जनरल फर्स्ट ईयर हम सॉल्व करेंगे जब जनरल गिवन हो, मतलब डाटा ओनली डाटा गिवन हो, तो फाइंड आउट द सेंट्रल मोमेंट, स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड समथिंग. सो दैट ही यूजिंग बहुत ही इजी, बट इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको फार्मूले रिमेंबर होने चाहिए. तो मैंने ये फार्मूले फर्स्ट ये राइट डाउन कर दिए हैं, एंड जो पहले गिवन हो वो फर्स्ट वी राइट डाउन दिस. व्हाट इज दिस गिवन? तो फाइंड द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट. फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है आपको? μ1, μ2, μ3 एंड μ4 इज नोन एज द फर्स्ट सेंट्रल फोर सेंट्रल मोमेंट्स. Distribution about any value a, that is a is given, this is the any value a is 2, 20, 40, 50, and also find beta 1, beta 2 and something. So first what is the given means a is given 5, and here μ1 dash 2, μ2 dash 20, μ3 dash 40, and μ4 dash is equal to 50. That is a given. In data is given μ1 dash, μ2 dash, μ3 and μ4 dash. So first you observe this, μ1 is always 0. This means first central moment is always 0. That is, remember, first central moment is always 0. Next, this is μ2, μ1 dash, μ2 dash whole square, μ2 dash is 20, μ1 dash whole square, this is μ1 dash 2 means minus 4. So that is 60. It means value of μ2 is 16. Next, here आ जाते हैं. μ3 equal to μ3 dash minus 3 μ2 dash μ1 dash plus 2 μ1 dash whole square. That is, so what is the value of μ3? μ3 here is 40. So 40 minus 3 μ2, 3 into 20. Next, μ1 2 plus 2 into μ1 dash square, that is 4. So simplification, this is 40 minus 60, 120 plus 8 equal to this 80 minus 80. Here this is minus 80, or again, so what is this? How much? 40, and here 20, 30, 6, 120. So here minus 80 plus 8, that is minus 72. That is the value of μ3. Next, μ4. So what is the μ4? So put here μ4 40, that is the value of μ4 450 minus 4 μ3 dash. So what is the μ3 dash? μ3 dash 40. Next, μ1 dash is 2 plus 6 into μ2 20 into μ1 dash whole square, that is 4 minus 3 into μ1 dash raised power 4. So 2 power 4 16. Simplifications. So what we get, the simplify this, then what we get answer.
So friends, here this is एक मिनट फ्रेंड, दैट इज हियर सम मिस्टेक, दैट इज हियर mu3 q होता है, mu3 is 2 mu1 dash q, that is here 8, sorry that is 8. So one correct here, this is 40 minus 120 plus 16, this is minus 80 minus plus 16, this is, अब simplify this is 4, here 716 minus 64, so that is a mu3 is 6 minus 64. Next here 50 240 2 6 into 20 into 4 minus 3 into 16, so total calculation then we get this 262. तो आप सिंप्लीफाई करिए, देन 262 इज आंसर. नेक्स्ट mu4, हम ये फाइंड आउट हो गया. आपका नेक्स्ट वर्क है इज फाइंड आउट द बीटा 1. तो बीटा 1 हियर, बीटा 1 इज फार्मूला दैट इज मींस -64 होल स्क्वायर अपॉन mu2. mu2 मींस 16 होल क्यूब, तो 16 into 16 into 16, सिंप्लीफिकेशन 64 into 64 upon 16 into 16 into 16, so 16 fours are 4, and here is also, and here is also 4, that is 1. So simply means beta 1 is 1. Next beta 2, so beta 2 is mu4 262 divided by mu2 means 16 into 16, that is here evaluation of this. So beta 1 and beta 2 is find out. नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट म्यू रूट 2, दिस इज द अंडर रूट 16 into 4, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू 2. एक जनरल मेथड है फाइंडिंग करके आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर ये फार्मूला रिमेंबर है, मिसिंग नहीं करेंगे, देन वी गेट द इजीली मार्क्स. तो अब नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम, जो सेकेंड प्रॉब्लम का आंसर है, सो हियर दैट इज इरेज कर रहा हूं मैं, फार्मूला में एज इट इज रहने दे रहा हूं, फार्मूले में कुछ चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि फार्मूला तो सेम ही रहेगा. सो ओनली दिस चेंज ऑफ दिस हियर. अब आते हैं फ्रेंड्स, तो पहला क्या होगा mu1. अब देखिए हियर दिस इज मींस mu1 डैश इज 1, mu2 डैश इज इक्वल टू 16, mu3 डैश इक्वल टू -4. That is a given according to this sequence is given mu1 mu2. So central moment is always 0, no problem, for central moment is 0. Next mu2 dash, so mu2 dash means here 16 minus mu1 dash whole square 1, that is a 15, equal to this mu3 dash. So mu3 dash is -4, 3 into mu2 dash 16. Next mu1 dash is 1 plus 2 into that is 1 again. So here 16 3s are 48 minus 42 52 and plus 2 that is -50 again. So mu4 फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीटा mu4 फाइंड आउट नहीं है, so don't required for this here, क्योंकि mu4 फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, ओनली फर्स्ट 3 सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट होंगे क्योंकि mu4 इज नॉट गिवन. सो हियर इज आल्सो, सो बीटा 1 इज mu3 -50 होल स्क्वायर एंड mu2 दैट इज 15 into 15 into 15, सिंप्लीफिकेशन 50 into 50 15 into 15 into 15. तो आप कैसे कैंसिल करना है कर सकते हैं, 5 3 जा 10, 5 2 जा 3 again 10 3, मतलब 20 upon 27 फाइंड आउट. और बीटा 2 फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि mu4 फाइंड आउट्स नहीं है, तो हियर इज इरेज दिस. तो एक जनरल सम प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, ऐसे जब डाटा इज गिवन हो, मतलब सिंपल डाटा गिवन हो, तो हम मोमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सीक्वेंस में आप
बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट कम टू द प्रॉब्लम्स द व्हेन डाटा इज गिवन. ठीक है, व्हेन डाटा इज गिवन हाउ टू द कैलकुलेट्स मीन्स इंटरवल के फॉर्म में गिवन हो, ग्रुपेड डाटा के फॉर्म में गिवन होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. मोमेंट अबाउट मीन, हाउ टू फाइंड मोमेंट अबाउट मीन द व्हेन गिवन ग्रुपेड डाटा. So first write down the problems, after then calculations. तो now friends here the एक questions लिया मैंने. Now compute the first 4 moment for following frequency. This is job. Number of job completed, interval is given है, मतलब 0 to 10, 0 to 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40, 40 to 50 is given and their frequency is given something. तो here दो हम इसको दो मेथड से फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट 2 और 3 मेथड्स भी अवेलेबल है. फर्स्ट मेथड आप जैसे u का यूज करिए और उससे फाइंड आउट करिए mu1 mu1 डैश mu2 डैश mu3 डैश एंड mu4 मींस फाइंड सेंट्रल में अबाउट find moment about any value, after then फिर moment about central moments. Next, अदरवाइज आप डायरेक्टली मीन फाइंड आउट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आप d का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. d का यूज कैसे करना है, x माइनस इक्वल टू d, तो वो भी मैं बताऊंगा. और ये सब तो नंबर ऑफ टेबल म्यू कैसे रिक्वायर्ड होती है कि हमें मालूम होता है कि म्यू r डैश इज इक्वल टू क्या आपका, अगर h के फॉर्म में लिखना है तो h रेज़ टू r समेशन f ऑफ u रेज़ पावर r समेशन ऑफ f, दैट इज द फार्मूला. ये फार्मूला है आपका जिससे कि हम फाइंड आउट करेंगे म्यू r डैश. तो म्यू1 डैश म्यू2 डैश एंड म्यू3 डैश सबके लिए रिक्वायर्ड होगा. तो नंबर ऑफ टेबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4 टेबल्स एंड इनिशियल. तो फर्स्ट जब व्हेन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन हो फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे आप, पहला वर्क दैट इज योर फाइंड राइट डाउन द क्लास इंटरवल एंड फाइंड आउट द मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट मींस सम लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2. तो 0 plus 10 is 5, 10 plus 20 30 15, 20 40 50 25, similarly 35 and 45. Next frequency is given, you find out. So what is the value of a. अब देखिए गिवन क्या है 1 2 3 4 5 6. तो आप you are free consider any value of a here, means a is also consider, here is also consider, here consider. बट हम जनरली ट्राई करते हैं कि मिडिल वैल्यू लें तो दैट इज अ कैलकुलेशन योर इजी हो जाए. अदरवाइज यू आर फ्री एनी वैल्यू कंसीडर टू a. सो दैट इज a फ्रीक्वेंसी x minus a. so x minus 25/10 मैंने कंसीडर कर लिया, दैट इज a is 25. so now this is minus 2 difference 10 here, x minus 7, that is the value of x. so 5 minus 25 minus 20 divided by 10 is the interval. H means h equal to 10. so that is your interval lower interval, so that is 10. so here minus 2. next 50 minus 25 minus 10 divided by minus 1 0. again 35 minus 25 10 divided by 10 is 1. that is find outs. next f of u find outs. so f of u means multiple of minus 12 minus 26, that is 0, 15 12 and sum minus 11. next f of u square means square of this and multiply this. so 2 2s are 4, 6 are 12, 1 square 1 and 26, here 0, 1 15 and again here 4 into 6 24. next q. so first u का q minus 8 and into 6, so 9 48. see 8 6 are 48, this is a minus 48. similarly this and 0 and so on. 15 again is 42. next 4 sum find कर लिए minus 11. next 96 26 15 and 40, that is a find out this. अब next वर्क find out the mu1 dash. तो चलिए mu1 dash को find कर लेते हैं. तो क्या मिलेगा आपका h into summation of f of u upon summation of f. so that is mu1 dash equal h means 10 into f of u means minus 11 divided by 100.
so that is minus 1.1. This is mu1 dash. ठीक है, minus mu1 dash, this is 1.1. Next mu2 dash, so h square, that is put here, f of u square upon summation of f, means h is 100 into f of u square 89, so that is 89 upon 100, so that is cancelled. Again we get 89, so mu2 dash is 89. mu3 dash, so similarly we find out the mu3 dash. mu3 dash is here h cube and summation of f of u cube divided by summation of f, so that is 1000 into h means 10 है, तो 10 power q 1000, here minus 11, तो minus 11 divided by 100, so this is minus 110. mu3 dash is a minus 110. Similarly we find out here, similarly you find out the mu4 dash. So mu4 dash, this is here h raised to 4, summation of f of u raised to 4 divided by summation of f. This is h raised to 4 means 1 2 3 4 40, 10 raised to 4 into 233 divided by 100, so that is cancelled, 23300, that is a mu4 dash. तो एक ये u मेथड से रहा फ्रेंड्स. अब हम क्या करेंगे, d, इसी प्रॉब्लम को mu1 mu2 mu3 डैश d का यूज करके फाइंड आउट करेंगे और फिर देन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो आप एग्जाम में सिर्फ कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे. मेथड हम यूज करेंगे हियर मेथड 2. दिस इज मेथड ऑफ 2. हियर मेथड सेकंड. So when you are using d equal to x minus a, use of this. So अब next क्या होगा वो हम चेंजिंग करेंगे. What we change here, totally change, that value change, here this change, here is also change, here. So मैं erase कर दे रहा हूँ ये. और हम देखेंगे कि क्या दोनों मेथड से हम यूज करेंगे हियर और दोनों मेथड से हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो है mu1 mu2 वो इक्वल आता है. mu1 डैश mu2 डैश mu3 डैश आर इक्वल्स आते हैं कि नहीं. आप एग्जाम में कोई एक यूज करेंगे तो a मान लीजिए 25 है, दैट इज x माइनस 25. तो 5 मींस हियर माइनस 20, माइनस 10, हियर 0, हियर 10, हियर 20. नेक्स्ट, तो अब हम फाइंड करेंगे f of d स्क्वायर. नेक्स्ट f of d स्क्वायर and another. So now friends, एक सेकेंड मेथड है जो यूजिंग ऑफ d. पहले u का यूज किया था इंटरवल से डिवाइड करके, बट हियर यूजिंग द d. तो d से मतलब आप क्या करना है, आपको इंटरवल मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. ये फ्रीक्वेंसी इज गिवन है. d सिर्फ वहां पे प्रीवियस में u था, डिवाइडेड बाय s था, हियर नॉट h, एंड हियर कंसीडर दिस. सेम मेथड है, बस प्रॉब्लम में सम थोड़ी कैलकुलेशन इज चेंजिंग. सो -20, -10, 0, 10, 20. नेक्स्ट f of d, तो दोनों का मल्टीपल -120, 260, 0, 15, एंड हियर नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ दिस 400 divided by 6, 2400, 100 here, and similarly continue this. All this just find out this. तो अब नेक्स्ट फ्रेंड क्या है कि व्हाट इज द म्यू आर डैश. तो जो म्यू आर डैश होता है आपका एफ डी आर अपॉन एफ ऑफ आर. तो फर्स्ट जैसे फाइंड आउट करना है आपको कि म्यू वन डैश, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ डी, दिस इज -110 अपॉन 100, so that is -1.1. तो ये प्रीवियस ही फाइंड आउट हुआ था. नेक्स्ट, तो mu2 डैश कर जाएगा f ऑफ d स्क्वायर समेशन ऑफ डिवाइडेड बाय n भी कर सकते हैं, सो दैट इज n भी है, नो प्रॉब्लम्स.
So we are 8900 upon 100, so that is cancelled. 89, this is mu2 dash, mu3 dash, summation of f of dq upon l. F of dq, this is here, means total calculation minus 1 here, mu3 dash, this is find out mu3 dash, or sorry, here this is 11000, or so minus 11 mu3 dash, that is the mu3 dash 110. Friends, here this is mistakes, 10000, that is here. So that is the calculations, क्योंकि here is cancel and here this is simplification, so that is here. So here 110. Next, mu4 dash. So mu4 dash divided by this means 23300 sorry, triple, not triple is again 40 divided by 100, that is cancelled. So 23300, this is mu4 dash. तो अब इससे क्लियर हुआ कि जो दोनों प्रीवियस मेथड से यूजिंग द यू एंड यूजिंग द डी दोनों से सेम फाइंड आउट होता है, तो आप कोई भी एक यूज करें एग्जाम में, नॉट बोथ, यूज द एनी वन. तो अब ये जब सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट, मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट हो गए, तो नेक्स्ट आपको सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करना है. तो इट मींस जो फाइंड आउट कर लिया आपने वो राइट अप कर लीजिए. दैट इज हियर means mu1 dash is equal to minus 1.1, mu2 dash is equal to this 89, mu3 dash is equal to minus 110, and mu4 dash is equal to this 23300. that is a mu4 dash. तो फर्स्ट हम राइट करेंगे फार्मूला. Sorry. So first central moment, this is mu2. Mu1 is always 0, no problem. That is mu2 dash, mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. This is mu2, this 89 minus 1.1 whole square. So कैलकुलेट दिस. तो मैंने कैलकुलेशन फाइंड आउट किया है, तो मैं इसे डायरेक्टली राइट डाउन करूंगा, आपको कैलकुलेट करें. तो हियर दिस इज होल स्क्वायर 89, दिस इज सिंप्लीफिकेशन, दिस इज 87.79. नेक्स्ट mu3. तो फ्रेंड्स फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला, mu3 डैश माइनस 3 mu2 डैश mu1 डैश प्लस 2 mu1 डैश होल स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला. तो अब put these value, mu3 means here minus 110 minus 3 mu2 89 into minus 1.1 plus 2 mu1 dash. So mu1 dash is again minus 1.1 whole cube, that is here whole cube. So simplification, this is mu3 is equal to 181.038. दैट इज आप सिंप्लीफाई करें देन वी गेट दिस, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो नो प्रॉब्लम, देन यू कैन कैलकुलेट दिस. और नेक्स्ट mu4, तो mu4 डैश माइनस 4 mu3 डैश mu1 डैश प्लस 6 mu2 डैश mu1 डैश होल स्क्वायर minus 3 mu1 dash raised power 4, and put all this value and simplify. 2 3 4 5 7.7477, that is a mu4. तो इस तरह से मतलब एक क्वेश्चन रहा जो रिलेटेड विद द प्रॉब्लम्स आते हैं मोमेंट और अबाउट समथिंग, तो अब इस तरह का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं एक जनरल. सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है फ्रेंड, मैंने एक मेथड आपको प्रोवाइड किया है हाउ टू सॉल्व दिस. नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा होगा रिग्रेशन ऑफ लाइन, कोरिलेशंस, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, उसकी थ्योरीज को थोड़ा जानेंगे क्या है और समथिंग. सो टेक केयर्स, थैंक यू, बाय बाय.